Afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon, ma'am. afternoon. Okay, so today first we will take a quick revision of the last class. Okay, then we will continue for today's topic. Okay, so in the last class, what we have studied? Anyone? In the last class. Reading habits, ma'am. Last class, we have discussed about these general characters or the external morphological characters or features of the pelimenoid prawn. Okay, in this we have actually discussed about the exoskeleton, and then we have studied about the body segments. Okay, and then the type, and then those segments bears a pair of appendages, and then we have taken in detail about the appendages which are attached to the different body segment. Okay, so today we will in the last class what we have seen, the body of the adult macrobrachium is consist of the 19 segments which have two regions, the cephalothoracic region and abdominal region. Cephalothorax have 13 segments, abdomen have 6 segments. Now in this cephalothoracic region, the 5 segments are of head and the 8 segments are of thorax region. Okay, and then we have seen the divisions of different body divisions, cephalothorax, abdomen. Then we talked about exoskeleton, which is made up of hard and cartilage cuticle. Then we have talked about the dorsal shield, dorsal plate, carapace, rostrum, branchial staggerty. And then we also discuss about the appendages. So as the prawn have 19 body segments, so it bears 19 pair of appendages, 13 pair cephalothoracic and 6 pair abdominal. And then we have taken on these appendages one by one. Okay, we have discussed in first we have discussed the uh, basic structure of the appendages. As we have seen that all the appendages in this pelimenoid prawn are biramous, means branched, except the first pair, okay, which is uniramous. And the first pair of the appendages is basically the antenule. Then we have also seen what is the basal stalk. Then lower region is known as the coxa, upper one is the basis. Okay, then we also talk about the endopodite, exopodite, epipodites. Okay, and then we have then we have taken the appendages of, once again. Okay, so appendages of cephalic region. So there is 5 pairs. 2 are preoral, antenule and antenna, and then 3 are postoral, that is mandible, maxillae and maxilla. And then we also talked about the 8 pair of thoracic appendages. First 3 anterior pairs are known as maxillipeds or foot jaw, and the posterior 5 pairs are known as walking legs or periopods. Then we have they taken the structure of this 5 pair. In this, what we have seen that the first and second leg is the chilated leg, and the remaining first, second and third pair of the walking legs are chilated pelimenoid prawn, and last 2 are the non-chilated legs. Okay, then we have in last class we are not able to talk in detail about the abdominal appendages. Okay, so today first we will take that, then we'll move to the next topic that we are going to have today in the detail. Okay, so as I have told in the last class that each segments bear the appendages. So here there is an abdominal segment, there are 6 abdominal segments, so it bears 6 pair of appendages. Okay, when we were talking about the general characteristic of crustacea, because the prawn, it belongs to the class crustacea, so the sexual dimorphism is very common in crustacea. Okay, so in prawn also there is a sexual dimorphic characters. Okay, and these sexual dimorphic characters is the major sexual dimorphic character is in the change in the shape or the modification, the modified form or some of the external structure in the abdominal appendages, which is also known as the pleopod. Okay,
So in the abdominal appendages, first to the first five pairs are known as the swimmerets or pleopod, and the last one is known as the uropod. Okay, so this swimmerets or the pleopods, okay, they helps in the swimming on the water surface, and uropod is the last one which act as a propeller. Okay, so all these six abdominal appendages, they are typically biramus, means joint, but there are, as I have told, there are some sexual dimorphic characters. So first we will, this is a typical structure of the first abdominal appendages. It have a coxa, basis, then endopodite and exopodite. Okay, this is a typical structure of a appendages in prawn. Okay, but when we go to the third abdominal appendages, okay, just see there is another outgrowth. This outgrowth is known as a appendix interna. Okay, so this appendix interna is absent in first abdominal appendages, but it is present in rest of the swimmerets or pleopod. Now if we take a closer look of the second abdominal appendages, okay, the second abdominal appendages have sexual dimorphic character, means in male there is a one extra outgrowth. You can look here, this is known as appendix masculina. This is absent in female prawn. So if you look on the third abdominal, sorry, the second abdominal appendages of a prawn, if there is a presence of the appendix masculina, then it is a male prawn, and if this appendix masculina is absent, means it is a female prawn. Okay, and there are some also modification of this abdominal appendages. Okay, which is a diagnostic in character, means which have taxonomic value. Suppose if we have to differentiate between the peliminoid and pinoid prawns, okay, peliminoid and pinoid prawns, so there is in pinoid prawns there are some modification in their abdominal appendages, okay, which act as a copulatory organ in the male and this egg carrying basket in the female. Okay, so we will discuss those two structure, the copulatory organ male and the egg carrying basket in the female of the pinoid prawn, which is absent in the peliminoid prawn. That we will take when we will discuss what are the different taxonomy, what are the different characters or the morphological features which have taxonomic value. Features which have a taxonomic value means we are talking about those characters or those morphological features which on the basis of that we can differentiate the species. Okay, so today I'm going to discuss about those morphological characters which are present in the prawn. On the basis of that we can differentiate the species, or we can simply say that we are going to talk about the external features or the morphological features which have the taxonomic value. Okay, so today we will see what are the chief characters, okay, or the main characters that are used for the identification of the prawn. So here is the list. Okay, these there are several means what I can say, there are several means morphological features which have taxonomic values, but these listed features, it have the greater taxonomic value, or the important features which have the taxonomic value. So the number one is the carapace and its spine, then the rostrum and the teeth which are present on the dorsal and the ventral surface of the rostrum, then the ridges or the carni which is present on the body of the prawn, then grooves which are present on the carapace, then abdominal carination or abdominal segments. Okay, then telson. Okay, telson is the last segment, abdominal segment of the body which have the anus opening. Okay, so the shape of telson, the presence of spine or absence of the spine, it also have the greater taxonomic value. Okay, then the appendages and their segments. The appendages, okay, so their structure, their substructure, their segmentation, they all have the taxonomic value. So we'll see then
petasma and appendix masculina in the male. So this is the male specific character, the petasma and appendix masculina. So we will also see it, and then thallicum in the female. So these are some of the chief organs, okay, or the parts, the body parts which have the taxonomic value. So we will take all these listed parts, body parts, one by one. So first we will talk about the carapace. Okay, so as here you can see that this carapace, in the anterior most part there is a outgrowth or protrusion which have this spine like structure or serration. Okay, so this is known as the rostrum, and this is this serration. Okay, and then and here there is some spines like postorbital spine, then branchiosternal spine, then hepatic cornea or the ridges. Okay, then postrostral cornea, then cervical cornea. So these ridges, okay, ridges means what? तरोई खाई है आप लोगों ने कभी? एनीवन तरोई की सब्जी खाई है? Yes, ma'am. कितने तरह की तरोई मिलती है आपके यहाँ बाजार में? तरोई समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? No, ma'am. तरोई नहीं जानते? नेनुआ No, ma'am. जानते हैं? हाँ 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 Yes, yes ma'am. ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. नेनुआ जानते हैं। ओके, तो परवर बोलते हैं क्या बोलते हैं? नेनुआ कितने तरह का बजा, अभी तो सीजन दो है। दो मैम। दो तरह का मैम। दो। कौन कौन सा? एक होता है एक तो उसमें जिसमें रीजेस होता है और एक में मतलब वो टफ, उसका स्मूथ एकदम स्मूथ सरफेस होता होता है। है। हाँ, तो जो रिज वाला नेनुआ होता है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है आपको? That is known as a ridge guard. ओके, रिज गार्ड। ओके, तो रिज आप समझ गए ना क्या होती है? ओके, सो यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ ना, सर्वाइकल कार्निया, पोस्टरोस्टल कार्निया, हेपेटिक कार्निया, इट बेसिकली द रिज. Okay, the hepatic ridge, the cervical ridge, the post-rostral ridge, okay, the brachiocardic ridge, okay, क्या है, post hepatic ridge. So basically इस जो कितनी ridges हैं, इनकी क्या position है, it all have the taxonomic value. उसके बाद जो spines हैं जो कांटे जैसे, branchiosternal spine, hepatic spine, suprahepatic spine, okay, all these have the taxonomic value. Okay, so you know now what is carapace? Carapace is basically a thick plate which covers the cephalothoracic region. Okay, and it have several ridges and spines, and those ridges and spines have the taxonomic value. Okay, means the number of spines, the position of the spines, the ridges, okay, they all actually specific to the particular species. That's why the carapace, the structure of the whole carapace have a very good taxonomic value. Means if you analyze the carapace in detail about a particular prawn species, you will be able to identify this species. Okay, so first one is the carapace. Now the rostrum. Here you can say that on the, अगर आप prawn को देखते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ serration है ना, कुछ कांटे जैसा है, स्पाइन जैसा. So this portion is rostrum, or here in this image you can also see it clearly. This is the rostrum. Okay, so rostrum कैसा है, first उसकी shape कैसी है, that also define the species type. कुछ में ये rostrum बिल्कुल straight है, किसी किसी species में ये rostrum upward है, turn है upward, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं. ठीक है, किसी स्पीसीज में ये डाउनवर्ड टर्न है. सो द रोस्ट्रम की जो शेप है दैट ऑल्सो हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज. ओके, अगर स्ट्रेट है तो एक अलग स्पीसीज होगी, अपवर्ड है तो अलग ग्रुप होगा, डाउनवर्ड है तो अलग ग्रुप होगा. उसके बाद ये जो आप स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर है, जो सिरेशन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कांटे जैसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So ये जो serration है, the number of serration, कितने serration है, that is also a taxonomic character. 7 है, 8 है, 10 है, 4 है, 5 है. So the number of serration is also a taxonomic character. उसके बाद अगर सिर्फ आउटर सरफेस पे है, जो ऊपर वाले सरफेस पे जो सेरेशन है, इसको हम बोलते हैं डॉर्सल रॉस्ट्रल टीथ, और नीचे वाले को हम बोलते हैं
ventral rostral teeth. Here you can see that this is the dorsal rostral teeth and this one is the ventral rostral teeth. Okay, so पहले तो ये कि कितने rostral teeth हैं वो भी एक diagnostic character है. उसके बाद वो dorsal surface पे हैं या फिर dorsal और ventral दोनों पर हैं, ठीक है, या सिर्फ ventral surface पे हैं, ये सारे diagnostic character हैं. ओके, rostrum की shape, फिर उसके ऊपर serration का number and then serration की position. ओके, means rostrum की shape, rostral teeth के number and then rostral teeth की position, whether they are on the dorsal surface or on the ventral surface or on the both surface. Okay, so this is also, if you see the rostrum or if you study the rostrum of a particular prawn species, you will be able to identify the species, or we can say that the rostrum and its structure, means the shape of the rostrum, the number of the rostral teeth and the position of the rostral teeth, it has a taxonomic value. It helps in the identification of the species. Okay, now as I have told, the ridge and the or the cardia. Okay, so this ridge actually here you can see that this is the adrostral sacculus and this is the एड्रोस्टल कार्निया. एड्रोस्टल कार्निया मीन्स बेसिकली द रिज. तो ये रिज जो है ये पूरा टर्मिनस तक जा रहा है या यहीं खत्म हो जा रहा है या बीच में खत्म हो रहा है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर. रिज कहाँ कितना है, कहाँ तक है, मिड ऑफ द कैरापिस है या मिड से थोड़ा पीछे है या एंड एकदम पोस्टीरियर एंड तक वो जाता है. all these means उसकी जो लेंथ है, रिज की लेंथ और पोजीशन, दैट ऑल्सो हैव द डायग्नोस्टिक वैल्यू. Now the grooves. Okay, there are some prawn species जिसकी scarapace पे एकदम mid dorsal जो line है, अगर आप prawn के mid dorsal line को देखते हैं, so there are some species which doesn't have any groove on the carapace, on the mid dorsal region. Okay, but there are few species जो mid dorsal region है of the carapace, वहां पे groove है, गड्ढे जैसा है, नाली जैसी है. ठीक है, so जो presence of the groove on the carapace or the non-grooved or the grooved carapace is also one of the diagnostic character. Means इसके basis पे आप species identification कर सकते हैं. Now the abdominal carination or the segment. Okay, कैसे abdominal segments हैं उसके basis पे भी हम जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्रॉन स्पीसीज को. ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉन पिनॉइड प्रॉन मीन्स द पैलेमिनॉइड प्रॉन लाइक मैक्रोब्रेकियम रोजनबर्गी. ओके, पिनाइड प्रॉन्स मीन्स लाइक पिनिस मोनोडॉन और पिनिस इंडिकस. दिस इज नॉन पिनॉइड प्रॉन. अगर मैं मैक्रोब्रेकियम रोजनबर्गी की बात करूं, दिस इज अ फ्रेश वाटर प्रॉन. द पिनाइड प्रॉन लाइक पिनिस इंडिकस which is a marine prawn. So here you can see the segmentation. This is the first segment, second, third, fourth, fifth, sixth. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. अब इस दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या होता है, आप ये जो सेकेंड सेगमेंट देख रहे हैं, ये जो सेकेंड जो सेगमेंट है इस पे जो रेज है, या ये देखिए थर्ड को भी ओवरलैप कर रही है और फर्स्ट को भी ओवरलैप कर रही है ना. It's overlapping the third one or third segment also and the first segment also. लेकिन अगर आप वही पिनाइड प्रॉन्स में देखते हैं तो जो इस पे जो सेकेंड पे जो आपकी जो सेकेंड सेगमेंट के ऊपर जो कवरिंग है, जो एक्सोस्केलेटन है, इट ओनली ओवरलैप्स द थर्ड सेगमेंट. इट इज नॉट ओवरलैपिंग द फर्स्ट सेगमेंट. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेकंड सेगमेंट है वो फर्स्ट को भी ओवरलैप कर रहा है, थर्ड को भी ओवरलैप कर रहा है. लेकिन यहाँ पे जो सेकंड सेगमेंट है वो सिर्फ थर्ड को, फर्स्ट सेकंड को ओवरलैप कर रहा है, सेकंड थर्ड को ओवरलैप कर रहा है, थर्ड फोर्थ को ओवरलैप कर रहा है, फोर्थ फिफ्थ को ओवरलैप कर रहा है. ठीक है, लेकिन नॉन पिनाइड प्रॉन्स में लाइक आपका जैसे कि आपका वो है फ्रेश वाटर प्रॉन है मैक्रोब्रेकियम, उसमें जो फर्स्ट है वो सेकंड को ओवरलैप नहीं कर रहा है, सेकंड फर्स्ट को ओवरलैप कर रहा है और सेकंड थर्ड को भी ओवरलैप कर रहा है, फिर थर्ड फोर्थ को कर रहा है और फोर्थ फिफ्थ को कर रहा है. ठीक है, तो जो ये एब्डोमिनल सेगमेंटेशन है, उनकी जो रिजेस हैं, उनका जो ओवरलैप है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर. ओके, now the telson, as I have told, the telson, ये जो आप पॉइंटेड से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो सबसे लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट होता है वहां पे एक ऐसा पॉइंटेड से स्ट्रक्चर होता है, दिस इज नोन एज अ टेल्सन. यहाँ पे जो एनिस की ओपनिंग होती है वो यहीं पे होती है. तो टेल्सन की शेप
और उस पर कितनी स्पाइंस लगे हैं, फिक्स्ड स्पाइंस हैं कि मूवेबल स्पाइंस हैं, फिर नंबर ऑफ स्पाइंस कितनी है, शेप एग्जैक्टली कैसी है, ये सारी चीज़ों को अगर हम स्टडी करते हैं सो दैट ऑल्सो हैव द टेक्सोनॉमिक वैल्यू, मीन्स ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होते हैं. ओके, नाउ द अपेंडेजेस एंड देयर सेगमेंट. ओके, सो मैंने बोला कि जैसे हम स्टडी की, हमने बहुत सारी अपेंडेजेस पढ़ी. वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेफेलिक अपेंडेजेस, देन थोरेसिक अपेंडेजेस एंड देन एब्डोमिनल अपेंडेजेस. वहाँ पे हमने देखा कि सब हर तरह के अपेंडेजेस के डिफरेंट शेप है, डिफरेंट सबका एक बेसिक स्ट्रक्चर है. सारे बाइरेमिस हैं, सब में एक बेसल स्टॉक है, सब में एंडोपोडाइट है, मेजॉरिटी में एक्सोपोडाइट है. लेकिन उसके बाद भी देयर इज द स्ट्रक्चरल वेरिएशन. वो स्ट्रक्चरल वेरिएशन इसलिए है क्योंकि हर सेगमेंट्स पे जो अपेंडेजेस हैं उनके अलग अलग फंक्शन है. कुछ अपेंडेजेस के फंक्शन है फूड होल्डिंग में, कुछ का मेस्टिकेशन में है, कुछ का वॉकिंग में है, कुछ का स्विमिंग में है, कुछ का पॉपुलेशन में है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी है. तो उसके बेसिस पे उनका स्ट्रक्चर में वेरिएशन. अब हियर वी कैन सी दैट द मैक्सिलिपिड, द थर्ड मैक्सिलिपिड कौन से अपेंडेजेस है? एनीवन कैन टेल मी? थर्ड मैक्सिलिपिड कौन से रीजन के अपेंडेज है? कोई बताएगा मुझे? एनीवन? आई एम ऑडिबल? Investigation. cephalic है. रीजन में पूछ रहे हैं. दिस इज सेफेलिक or thoracic? Yesterday we had a detailed class. I have told it all. Ma'am, cephalic reason. I have told it for 10 times. Okay, there is a 5 cephalic and 8 thoracic. तो आप वो जो 8 thoracic appendages हैं उसमें जो first 3 appendages हैं उनका क्या नाम है? First maxilliped, second maxilliped and third maxilliped. Is it? Yes or no? Yes ma'am. Yesterday I have told it almost 10 times ना कि सारे appendages के मैंने numbers भी बताए हैं, नाम भी बताए हैं. Okay, so just come to the class. Okay, so the third maxilliped, if we look at the third maxilliped in the adult male, you can say that there is a difference in the shape. Okay, in different species. Okay, there is one is the Pinus penicillatus, then Pinus indicus and Pinus Merguensis. Okay, so these are the 3 different species of a genus, and the third maxilliped in the adult male have different shape. Okay, so the appendages and their segments that also have the taxonomic value. Okay, we'll also, and when we see about the abdominal appendages, if we look into the abdominal appendages, means the pleopods or the swimrates, or we can say that the, okay, so all those also have the taxonomic value. Some used for the identification of male, female, and some have some different modification. On the basis of that, we can differentiate the species. Okay, so here is the petasma and the appendix masculina in male. So here this is the representative image of the male prawn. So when we see here, sorry, this is the second pair. This is the second pair of pleopod or the second swim rate. Okay, so ये जो आपका second swim rate होता है उसमें आपका मेल में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ होती है. यू कैन सी हेयर ऑल्सो. और ये जो रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज नोन एज द अपेंडिक्स मेस्कुलाइना. सो अपेंडिक्स मेस्कुलाइना जो है ये सिर्फ मेल में है, ये फीमेल में नहीं है. ठीक है, और अपेंडिक्स मेस्कुलाइना एक तो फीमेल में नहीं है, सिर्फ मेल में है. और मेल में भी सारे प्रॉन्स में नहीं है. देयर आर सम ग्रुप ऑफ प्रॉन्स लाइक आपके जो नॉन पेनॉइड प्रॉन्स हैं, ठीक है, उसमें सॉरी एक कुछ आपके प्रॉन्स हैं उसमें हैं और कुछ में नहीं है. ठीक है, उसके बाद जैसे ये है पेटेस्मा. पेटेस्मा बेसिकली क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट पेयर ऑफ प्लेओपोड होता है. मतलब अगर मैं यहाँ की बात करूँ, फर्स्ट पेयर ऑफ प्लेओपोड और द फर्स्ट पेयर ऑफ स्विम रेट, वो क्या होता है, उस जो फर्स्ट पेयर ऑफ जो स्विम रेट होती है ना, उसका क्या होता है, आपका जो एंडोपोड होता है, द फर्स्ट पेयर का जो दो फर्स्ट पेयर है, दोनों फर्स्ट पेयर की प्लेओपोड का जो एंडोपोड है वो ज्वाइंट हो जाता है. और ज्वाइंट होके वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं पेटेस्मा. सो
So ये जो स्ट्रक्चर होता है पेटास्मा इन द मेल प्रॉन, इट एक्चुअली हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द फीमेल प्रॉन, ओके, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। तो ये जो है बेसिकली जो आपकी फर्स्ट प्लियोपोड है, जो फर्स्ट पेयर ऑफ प्लियोपोड है, वो मॉडिफाई हो जाता है कुछ प्रॉन स्पीसीज में एंड इट सर्व एज अ पेटास्मा। सो पेटास्मा सारे प्रॉन स्पीसीज में नहीं है। जैसे अगर मैं पेनाइट प्रॉन्स की बात करूं या मरीन शिम्प लाइक पिनस इंडिकस या पिनस की और दूसरी जो स्पीसीज हैं, उसमें ये पेटास्मा होता है, यानी कि उसका जो फर्स्ट पेयर ऑफ प्लियोपोड है वो ज्वाइंट होके ऐसा पेटास्मा एक स्ट्रक्चर बनाता है जो स्पर्म ट्रांसफर करता है फीमेल को, ठीक है। लेकिन वही आपका जो नॉन पिनोइड प्रॉन है जैसे मैक्रोब्रेकियम है, उसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। उसमें जो आपका फर्स्ट पेयर ऑफ प्लियोपोड है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, ओके। नाउ द थैलिकम इन द फीमेल, ओके। सो हेयर ऑल्सो जो थैलिकम की शेप है, बेसिकली जो सबसे लास्ट वाली जो प्लियोपोड होता है, मतलब फिफ्थ पेयर ऑफ द प्लियोपोड। सो जो फिफ्थ पेयर ऑफ द प्लियोपोड होता है, जो दोनों फिफ्थ हैं, वो दोनों इंटरलॉक करके थैलिकम जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, इसको स्पर्म रिसेप्टर भी बोल सकते हैं, या यहाँ पे बेसिकली जो फीमेल होती है वो स्पर्म को स्टोर करती है। मीन्स जब स्पर्म जो है, जब मेल जो है पेटास्मा के थ्रू फीमेल पे जब स्पर्म ट्रांसफर करता है, तो फीमेल जो है उस स्पर्म को थैलिकम में स्टोर करते हैं और फिर वो अंदर से जो है ओवरी से जो है एग रिलीज करते हैं, और जो इस थैलिकम में जो स्पर्म स्टोर्ड है उसके साथ जब वो कांटेक्ट में आता है, फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन इट यूज टू रिलीज इन द वाटर। फिर जो फर्टिलाइज्ड एग है वो वाटर में जो है फीमेल रिलीज कर देती है। तो जो शेप ऑफ द थैलिकम होती है या प्रेजेंट मॉडिफिकेशन थैलिकम है या नहीं है, मीन्स जो फिफ्थ प्लियोपोड है वो मॉडिफाई होकर थैलिकम बना रहा है कि नहीं बना रहा है, वो एक डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है। उसके बाद जो थैलिकम का स्ट्रक्चर बना, उसकी शेप कैसी है, वो भी जो है एक तरह से डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है। अब ये जो थैलिकम है, जो बेसिकली द ऑर्गन ऑफ स्टोरिंग द स्पर्म, वो आपका पिनोइड प्रॉन्स में है, लेकिन पेलिमिनोइड प्रॉन में ऐसा कुछ नहीं होता है। पेलिमिनोइड प्रॉन में क्या करते हैं, बेसिकली जो सेकंड से लेके फिफ्थ पेयर ऑफ प्लियोपोड होती हैं वो इंटरलॉक होके रहती हैं, और वहीं पे जो है फिश जो है उनको egg carry, fish carry, female prawn जो है that used to carry the egg, okay. So these are the different means morphological features which have the means taxonomic value. So these features, these different features in the prawn, if you compared or you study in detail about these features, okay, this like the carapace, its spine, the rostrum, the ridges, the grooves on the carapace, abdominal segment, their overlapping, their ridges, the antelson, shape of the telson, presence of the spines, type of the spines, then appendages, their segments, their modification, then petasma, appendix masculina, their position, their presence, their absence, then thalicum in female, okay, their presence, their absence, their modified form, okay. All these have the great taxonomic value, means when you study these structure in detail, you will be able to identify the different species of the prawn. So from the next class onward, when we will talk about the taxonomic features or the taxonomic or the diagnostic character of the different prawn species, whether the peliminoid prawn or the penoid prawn, then we have to remember all these structures or the organs of the prawn. Okay, on the basis of that, we are going to study the different family, the genus and the species. Okay. So you have to remember, if you have any confusion about these structure and features, okay, we can discuss or we can take in this class only. Okay, so for today up to this only, for discussion and any confusion, we just take just right now. Okay.